Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hello friends. So this is a very important class for different entrance examination related to teachership like OSSTET, CTET or another entrance examination. So in this class we discuss the another concept of pedagogy, that is critical pedagogy. Okay. So here in this class we learn about critical pedagogy, and as we know, the concept of critical pedagogy was given by Paul Freire. Paul Freire was the uh, founder of critical pedagogy, and the process of pedagogy was influenced, or the process of pedagogy that was, I think, popularized by the help of Henry Girox. Okay, Henry Girox, जे कि एई pedagogical concept को popularize करथिले. तो दीटा ना एठी हमें मन रखिबा, कारण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु वेरी इंपोर्टेंट आ क्वेश्चन भी बहुत बार आसे. तो ए कांसेप्ट रे हमें कोन कोन देखिबा ना, क्रिटिकल पेडागोजी रो कांसेप्ट देखिबा, केमिति तार ओरिजिन, केमिति तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आसिला, से कांसेप्ट बाबदरे टिके डिस्कशन करिबा. देन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कांसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी ताकू टिके डिस्कशन करिबा. एंड आल्सो we discuss the different components of critical pedagogy like banking system and other processes. तो सही concept गुड़ा को हमें cover up करिबा ए क्लास रे. So let's start about critical pedagogy, which was given by Paul Freire. So first we understand what is the meaning of critical pedagogy. तो क्रिटिकल पेडागोजी रो मीनिंग कोन देखिबा. द टीचिंग, दैट इज अ टीचिंग कांसेप्ट. द टीचिंग कांसेप्ट known as critical pedagogy, the teaching concept known as critical pedagogy encourages teachers and the instructor to support students in challenging, oppressive and overwhelming situations. So when student face different type of odd situations like challenging situation होई परिबो, oppressive situation होई परिबो, overwhelming situation होई परिबो, तो जो odd situation रे जते बेले हमें पिला को कोन करचोंती ना टीचिंग दउचोंती प्रॉपर्ली, तो सेही टीचिंग प्रोसेस टाको हमें क्रिटिकल पेडागोजी बोली कुआ जो. इन जनरल प्रोसेस रे वी provide a proper teaching process in our classroom. Okay, that is the part of pedagogical concept. But here sometimes we found there are different type of challenging situations are there, and in this challenging situation if we adopt a suitable type of teaching process in our classroom situation, then that type of teaching process is generally known as critical pedagogy. The foundation lies in the concept of critical pedagogy, which calls for recognition and challenging the social order. Okay, so the pre-existing social order जो गुड़ा रही ची, सेतरे किछि जिंस रे हमें देखि परिबा जे these are not suitable for our student, these are not good for teaching processes, but still we can use this social order in our society as well as in our educational system. तो एई जगह रे क्रिटिकल पेडागोजी रो कांसेप्ट जोटा रहिला, सेही सोशल जोटा अछि ताकू बाहरी की हमें उटे पर्टिकुलर बा प्रॉपर वे रे जोटा की पिलांकर नीड अछि, सेही प्रोसेस रे पिलांको हमें टीचिंग प्रोसेस को बा पिलांको हमें टीचिंग प्रोसेस रे इन्वॉल्व करेइबा. And the main motive of this pedagogy is to help student examine and confront the injustice in family, societies, schools and universities by using the teacher's knowledge and understanding as an example. So generally the concept of critical pedagogy was evolved at Brazil in colonial situations. Okay, जो जगह रे की slaves रो concept थिला, सेही concept रु जेहेतु पाउल फेरी तो जो क्रिटिकल पेडागोजी रो कांसेप्ट को इरेडिकेट करथिले, ड्यू टू दैट बा से सही लेवल रो लोक थिले, से फील करिसंती, फेस करिसंती डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. हम आगु गले टिके देखिबा. तो ड्यू टू दैट सेही कांसेप्ट को से नेई की केमिति पेडागोजिकल प्रोसेस रे ताकू सॉल्व करि होबो, सेहीटा को से एठी यूज करिसंती. जेमिति कि से कहूची द मेन मोटिव ऑफ दिस पेडागोजी, मेन मोटिव कोन, टू हेल्प स्टूडेंट्स एग्जामाइन एंड कन्फ्रंट द इनजस्टिस. को क्राइटेरिया रे से एग्जामाइन करिवो और कन्फ्रंट करिवो ना इनजस्टिस इन फैमिली, जदि सोसाइटी रे से फैमिली को पर्टिकुलरली गोटे पर्टिकुलर फैमिली को जदि हम इनजस्टिस दउचंती,
बा सोसाइटीज को जदि भी इनजस्टिस आम प्रोवाइड कर स्कूल यूनिवर्सिटी तो यही कथा को प्रॉब्लम केमिति सॉल्व करी हो ना बाय द हेल्प ऑफ और बाय यूजिंग द टीचर्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एज एन एग्जांपल ए कांसेप्ट को नहीं कि केमिति प्रॉपर वे रे आम पिला को टीचिंग दे परिबा तांकर एजुकेशनल डेवलपमेंट करि परिबा सी प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर विद इन द इंडिविजुअल्स दैट इज नोन एज क्रिटिकल पेडागोजी. And critical pedagogy asks teachers to reject the notions of knowledge as a neutral or objective. Okay. तो critical pedagogy कौन कहूची reject concept गुड़ा को टिके मन रखिबा reject the notion of knowledge as a neutral or objective. तो जो objective बा neutral knowledge को ताको हमें oppose करी माने जो critical pedagogy oppose करूची reject करूची and instead present knowledge as a subjective and support students in questioning the power of structure that have been put in place of uphold the status quo. Okay, so that means here the objective, the neutral type of education, the pre-existing education system are rejected by this pedagogical concept, and that pedagogy advocates the present knowledge that is the subjective in nature जो concept को हमें कहउचंती सेही knowledge बा सेही concept उपरे focused हमें होबा सेही concept रे पिला को education provide करिबा subjective manner रे detailed manner रे जेमिति कि ता भितरे critical thinking रो development होबो तो through critical pedagogy if we provide the subjective knowledge to the individual then we found student can develop the critical analytical capacity by critically से particular concept को analyze करि परिबो analysis करि परिबो तो सेही purpose को सेही concept को नै critical pedagogy रो concept आसीथिला. This happens in the light of our understanding of knowledge construction and majority education. तो यही कॉन्सेप्टटा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस रे ही तैयारी करा जाईची कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को ये नहीं कि चालुची तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज कंस्ट्रक्शन केमिति हाउ टू गेट नॉलेज हाउ टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज विद इन अस ए कॉन्सेप्ट को नहीं कि हमें पेडागोजिकल पर्पस बा प्रोसेस को यूज करबा एई एजुकेशन प्रोसेस रे. सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट क्रिटिकल पेडागोजी. देन नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट द हिस्ट्री और फ्रॉम व्हाट और फ्रॉम व्हेन द क्रिटिकल पेडागोजी कम आउट. ओके, that is the origin of critical pedagogy. So Paul Freire, okay, very important point, very important name, remember it. Paul Freire, a Brazilian philosopher and educator, established the concept of critical pedagogy and popularized it with his 1968 book Pedagogy of the Oppressed. Okay, Pedagogy of the Oppressed, that is a book, and in that book he provide a concept or he discuss a concept that is critical pedagogy. Okay, तो सही concept को से discussion कले define कले ताकू बुझिबा पई चेष्टा कले बा बुझेइले clearly understand करेइले हमकु तो सही बही रे ए concept first time से नै कि आस्थिले Paul Freire. Following that it gains popularized across the globe with a solid foundation in the United States where its proponents work to finds ways to use education to fight oppressions like racism and sexism. Okay, so जेतु आमे गुटे progressive thinker Paul Freire, one of the greatest modern philosopher, and he was the progressive thinker. We consider he was the progressive thinker. तो existing concept उपरे से बेसी फोकस करथिले. ओके, तो existentialist philosopher भी आमे ताको किछि मात्रा रे कहंती. तो से philosophical perspective रे सी जतले कॉन्सेप्ट देले क्रिटिकल पेडागोजी रो कॉन्सेप्ट देले कोउथरे पेडागोजी ऑफ ऑपरेशन ऑपरेस्ड बुक रे तो से कॉन्सेप्ट जतले पॉपुलराइज्ड हला थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स रे कोन हला सेटा बेसी यूज होबा कथा चिंता करा गला. दैट मींस दोज हु आर स्कॉलर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स जो माने क्रिटिकल पेडागोजी ऊपर रिसर्च कले आफ्टर पाउल फेरी के ऊपर जो माने सब आसिले जो माने की डिस्कशन कले कोन ना क्रिटिकल पेडागोजी कॉन्सेप्ट ऊपर सेही मानकर कॉन्सेप्ट रहिला से माने रियलाइज कले जे इन दिस मेथड ओके बाय दिस मेथड नॉट इन दिस बाय दिस मेथड वी कैन सॉल्व द डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स लाइक रेसिज्म एंड सेक्सिज्म. ओके, जो रेस डिफरेंट जो रेस कास्ट ई सब कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी रे हम रहउची मेनली यूनाइटेड स्टेट्स रे जो हमरो गोरा कला ओके ब्लैक व्हाइट ई जो कॉन्सेप्ट तांको भितरे रहिची जो रेसिज्म रो कॉन्सेप्ट और सेक्सिज्म रो जो कॉन्सेप्ट मेल फीमेल ए कॉन्सेप्ट को आमे केमिति इराडिकेट करिबा हम सोसाइटी रु से सोसाइटी रो इराडिकेशन पई दैट पेडागोजी इज वेरी यूजफुल अकॉर्डिंग टू पाउल फेरी.
then it is developed, it absorbed. As it developed, it absorbed ideas from several disciplines including postmodern theory, feminist theory. को theory को से बेस करके concept को develop करथिले ना postmodern theory, feminist theory, post colonial theory जोटी कि आमे slaves जो जाति प्रथा जो सॉरी जो दास प्रथा जो concept थाए सेउटू, then queer theory, the human rights movement, the civil rights movement, the disability rights movement, and the indigenous rights movement. Okay, so from the every problems, okay, every problems in our society, सबू problem को सी particularly analyze कले, सबू problem को सी critically analyze कले, and after that he tried to provide a solution. Okay, आउ जो solution आमे जमी जानी चंती, a lot of social problems are solved by the help of educational process. तो कौन भलिया educational process को आमे adopt कले विभिन्न प्रकार problem को solve करी परिबा, सेही कथा को से identify कले. And जो जो concept, ए जो मु जो concept गुडा कहली जेमति कि post modern theory हो, feminist theory हो, post colonial theory हो, जो different theory रो concept दिया गला, these are the basic and the very important and crucial problem of our society. And from this problem, or to solve all these problems, he provide a concept of critical pedagogy, and he realized the process of critical pedagogy, if we adopt in our classroom situation, then automatically in future, when these individuals are become citizens, okay, for the society, actual citizen for the society, they should eradicate all these problems, they should create a democratic atmosphere in the society. तो এই concept को base करिकी सिए এই theory टा को देइथिले. And Freire supports students' capacity for critical thought regarding their educational circumstances. Those who practice critical pedagogy believe that in this way of thinking enables students to recognize connections between their problems and experience and the social context in which they are embedded. Okay, तो जिए जो सोसाइटी रोची, जिए जो सोसाइटी रो जो प्रॉब्लम को फेस करूची, से प्रॉब्लम को सही जगह रे हमें केमती सॉल्यूशन करिवा थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस. ड्यू टू दैट Freire provide a new type of pedagogical concept to use in our educational teaching. तो एई प्रोसेस रे एजुकेशनल बा क्रिटिकल पेडागोजी रो कांसेप्ट हम एजुकेशन रे डेवलप हेइतला. तो बेसिकली हम एठी कोन कोन पॉइंट को हम इंपोर्टेंट रखिबा ना. फर्स्ट जेमिति कहूची जे पाउल फेरी जे कि ब्राजिलियन फिलोसोफर, सी एई कांसेप्ट को नै कि आस्थिले. सेकंड तांको बुक रो ना पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ए बुक रो कांसेप्ट को मन रखिबा. कहा अगेंस्ट फाइट बेसिकली करा होतला रेसिज्म और सेक्सिज्म रो कांसेप्ट ऊपर, एंड डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को बेस करी के हितला से कांसेप्ट ऊपर हमें से कांसेप्ट को हम मन रखिबा. So that is the origin of critical pedagogy. Then the next part is features of critical pedagogy. What are the basic features of critical pedagogy? तो हमें critical pedagogy को बुझिबा पहले features को बुझिबा दरकार. features बुझिले automatically we can understand the concept of critical pedagogy. So any pedagogy should be mindful of the reality that education is instructionally political according to critical pedagogy. Okay, any pedagogy should be mindful of the reality. Realitycal concept रे हमें जो pedagogy, what is the meaning of pedagogy? Pedagogy रो जो concept कौन? तो pedagogy को हमें जो define करिबा, we found that is a art of teaching. That is an art of teaching. हमें को way रे को process रे classroom को transit करूचंदी effectively, successfully. That is an art. Okay, सीटा तो सही art को हमें pedagogical concept बोली कहती. तो should be mindful and reality that education is intrinsically political according to critical pedagogy. तो critical pedagogy रे से कौन कहूची जे education is intrinsically political concept बोली से कहूची. that means it would a political system जेमिति हमर अछि. similar way रे educational process also that is a intrinsically political system बोली पाउल फेरी कहले. And it emphasizes conversion over one way knowledge transfer. Okay, the conversion over one way knowledge transfer emphasizes dialogue is necessary to start the awareness process since man does not construct himself in silence. तो एटी से कौन कहउचंती ना, we provide freedom to the individuals or our students to develop or to कहि परिबा हमें कोन टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स. ओके, से निजो को निजो समान निजे एक्सप्लोर करिवे. तो सेही भलिया फ्रीडम तांकु दिया जीवो जो कथरा कि से आउट वे रे डिफाइन कले कोन ना, dialogue is necessary to start the awareness process since
man does not construct himself in silence. तो silence रे रहिले जदि आमे पूरा silence maintain करूचंती तो आमे जदि आमे निजको express न करिबा ताहले आमे आम भितरे कोन कथाटा डेवलप हेई परिबो कोन कथारे आमे माने जो कॉम्पिटेंट अछंती से जिंस को आमे आइडेंटिफाई करि परिबानी कि आउ काहाकू देखि परिबानी तो एठी सेही कथा ऊपर रहउची डायलॉग इज ए वेरी इंपोर्टेंट नेसेसरी कांसेप्ट से कांसेप्ट को नेकी आमे एजुकेशन प्रोसेस को नबा so silence through the words act and reflection the primary components of the learning process is the employment such as discussion so the basic and the most important and primary component of educational by learning process that is discussion so time to time we also conduct different discussional processes within our classroom situation जोठी की कोन हबो ना पिला निजो को एक्सप्लोर करिया पई सुजोग पाइबो आमे जतला गोटे ग्रुप करी गोटे डिस्कशन कांसेप्ट रे जिबा देन से जगह देखिबो पिला जे समस्ते डिस्कशन रे पार्टिसिपेट करूचंती ऑटोमेटिकली ता भितरे भी गोटे एंथुसियाज्म आसीबो जे ही आल्सो वांट टू और ही आल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन आउ से किछि डायलॉग दबो बा किछि कहिबो तो निजको से एक्सप्लोर करिया पई ताकू स्कोप दबा एजुकेशन प्रोसेस रे जो पेडागोजिकल कांसेप्ट एई कथा को नउची दैट पेडागोजी इज नोन एज क्रिटिकल पेडागोजी and education should be based on a social and educational vision of justice and equality तो एजुकेशन कौन कहूची सी ना जेहेतु वी नो एजुकेशन एंड सोसाइटी आर वेरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ओके तो विदाउट एजुकेशन सोसाइटी बहुत प्रॉब्लम फेस करिवो एंड आल्सो इफ वी वांट टू क्रिएट एन एजुकेशनल सिस्टम एंड प्रोसेस आउ सोसाइटी को आमे जदी छाडी दउचन देन एजुकेशनल प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट्स आर नॉट कंप्लीटेड तो एई कॉन्सेप्ट को नेकी सिटी से डिफाइन कले जे एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन सोशल एंड इंडिविजुअल विजन जेमिति कि हम आगु डिस्कशन ऑलरेडी करचंती जे एजुकेशन टा सोशिएबिलिटी बा सोसाइटी रो डेवलपमेंट आउ इंडिविजुअलिटी रो डेवलपमेंट बोथ को एम्फासाइज करे ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी ओके तो एजुकेशन प्रोसेस टा बोथ सोसाइटी आउ इंडिविजुअल समस्त को इक्वाली इंपोर्टेंस देकी केमिति क्रिएट हेई परिबो बा केमिति डेवलप करई परिबो से कथा ऊपर फोकस्ड रहिबो then education ought to encourage the development of the mind and emancipatory changes so through education we can ensure the development of different parts like our mind then emancipatory changes जो जिंस गुडा चेंज होउची ए सब कथा कहा पई होउची ना only by the help of education तो एजुकेशन ए भलिया डेवलपमेंटल प्रोसेस को ही कैरिड आउट करि परिबो जो हम सोसाइटी जेहेतु दैट कांसेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज due to that if we want to eradicate different social issues or different social problems in our society from our society then we must need a proper and good educational system and process जे की कोन करिवो ना सोसाइटी जो विभिन्न प्रकार मिसकनसेप्शंस अछि जो सोसाइटी रे विभिन्न प्रकार जो सुपरस्टिशंस अछि जो सोसाइटी रे जो सब विभिन्न प्रकार कॉन्सिक्वेंसेस अछि तो ए सब कथा को हमें जतबेले इराडिकेट करिया कथा कहउचंती देन एजुकेशनल सिस्टम एंड प्रोसेस इज वेरी हेल्पफुल फॉर इन दिस प्रोसेस then education should emphasize the importance of human freedom from oppressions and sufferings and ame just agu tige discussion kari ki asilu je freedom is a very important concept for human being jodi ame freedom pilangu no douchandi jodi human being ko to no douchandi human development hi periboni तो similarly if we do not provide proper freedom to our student in our educational system then also we cannot ensure the fullest development of the individuals तो आमे freedom कोउटु दबा ना oppressions and suffering रु तांको freedom दबा then it envisages a new world that is more democratic just and equal बुझियो जे concept कोन तो सी तांकर जेहेतु मु कहिछि जे गुटे एभलिया सोसाइटी क्रिएट करिवा कथा से चिंता करले जेहेतु गुटे प्रोग्रेसिव थिंकर से थिले and he also found a lot of problems in his life due to that he want to try or he want to develop a new type of society and where we found more democracy just and equal okay equality concept समस्त को भीतर रहिबो एई भलिया गुटे सोसाइटी रो से स्वप्न देखिले ठीक अछि सेति पई एई प्रकार पेडागोजी को से डेवलप करथिले आ एजुकेशन ले जदी एई भलिया कांसेप्ट को हम यूज करबा ऑटोमेटिकली वी फाउंड देयर वाज ए न्यू बेटर सोसाइटी इन आवर फ्यूचर then we discuss some components of critical pedagogy with starting banking system of education तो banking system of education कोन आमे एबे टिके डिस्कशन करिवा तो जेमिति कि आमे जानि चंदी बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग आमे जानि चंदी बैंक कथा सेठी कोन कोन हुए तो सेही कथा को नै कि एजुकेशन सहित केमिति रिलेटेड करा गला आ एई सिचुएशन सिस्टम टा
एजुकेशन सिस्टम पाई गुड और बैड से कांसेप्ट ऊपर हम डिस्कशन करिबा सो पाउल फेरी यूज्ड द आइकॉनिक टर्म बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू रेफर टू करंट एजुकेशनल सिस्टम जो आज का डेट रे जो एजुकेशनल सिस्टम हम फॉलो करूचंती तो सही एजुकेशनल सिस्टम को से कौन कहले ना दैट इज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन so he did this because the traditional education system involves teachers depositing knowledge and information into students empty account तो आमे जेमिति आमे कोन करू ना आमे गुटे खाताटे खोलु बैंक रे जो आमे हमर अर्निंग को नै की आम पाखरे जोटा एक्स्ट्रा जोटा आम पाखरे एक्स्ट्रा हो सरप्लस अमाउंट को आमे नै कोन करछु ना बैंक रे डिपॉजिट करछु सॉरी सरप्लस कहूची जोटा आम पाखरे एक्स्ट्रा अमाउंट होची तो से एक्स्ट्रा अमाउंट को नै की आमे कोन करछु ना बैंक रे डिपॉजिट करछु ठीक अछि तो similarly in the process of education if we consider the traditional system then we found teachers are more knowledgeable in nature and students are less due to that ए जो मोर नॉलेज जो टीचर पाखे रहिला से नॉलेज को नै की स्टूडेंट रो जो अकाउंट रे डिपॉजिट करा हबो मच लाइक वन वुड डू विथ द बैंक अकाउंट जेमिति हमें बैंक अकाउंट रे करू हमें गुटा अर्निंग कलु हमर एक्स्ट्रा अमाउंट किछि बाहरला हमें ता कोन करू ना सेविंग कोंटी करू ना बैंक रे करू सिमिलर प्रोसेस रे टीचर पाखे बहुत नॉलेज अछि तो से नॉलेज को से किछि नै की कोन करिवो ना स्टूडेंट अकाउंट रे स्टूडेंट पाखे डिपॉजिट करिवो तो एई कांसेप्ट को बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन बोली कुआ होतला कुआ होछि देन अकॉर्डिंग टू फेरी कन्वेंशनल एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग इन व्हिच द इंस्ट्रक्टर इज ए डिपॉजिटर एंड द प्यूपिल्स आर द डिपॉजिटरीज ओके तो कन्वेंशनल जो एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थिला तो जो माने इंस्ट्रक्टर रहिले बा टीचर रहिले दे आर द डिपॉजिटर से माने डिपॉजिट करिवे किए डिपॉजिट नबो डिपॉजिटरीज किए न प्यूपिल स्टूडेंट्स आर द डिपॉजिटरीज क्लियर in this educational approach the teacher lecture and the pupils listen retain and repeat केवल एमाने को प्रोसेस रे रहिबे सुनिबे रिटेन करिवे आउ ताको रिपीट करिवे एथिरे एजुकेशनल प्रोसेस कंप्लीट होबो इफ वी अडॉप्ट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम जो कथाटा कुआ जाउची से सिस्टम रे आमे बेसिक कांसेप्ट रे कोन बुझिले ना सिंपल जो माने टीचर्स रहिले दे आर मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स तांको पाखरे बहुत नॉलेज अछि तो से नॉलेज को से माने डिपॉजिट करिवे कोठी ना एम्प्टी माइंड जोटा को हमें एम्प्टी स्टूडेंट्स एम्प्टी अकाउंट बोली कहउचंदी दैट इज द स्टूडेंट एम्प्टी माइंड सेठी डिपॉजिट हबो तो एठी इंस्ट्रक्टर्स आर डिपॉजिटर्स एंड प्यूपिल्स आर डिपॉजिटरीज तो ए केस रे कोन हबो ना जोटा डिपॉजिट करा गला ताकू लिसन माने सुनी की ताकू डिपॉजिट करिवे देन रिटेन ताकू सेव करी की रखिवे आउ ताकू जतल दरकार ताकू रिपीट करिवे तो एई कांसेप्ट रे एजुकेशन सिस्टम चलथिला तो वर्तमान तमो ऊपर छाड़ दिया हला जे तमे चिंता करो जे बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज गुड सिस्टम फॉर इन आवर एजुकेशनल प्रोसेस और नॉट देन डायलॉजिकल मेथड ए सब कांसेप्ट बैंकिंग सिस्टम सहित रिलेटेड भी अछि तो सब कांसेप्ट को हमें क्लियरली डिस्कशन एठी करिवा तो पाउल फेरी सजेस्टेड प्रॉब्लम पोजिंग एज एन अल्टरनेटिव टू द करंट oppressive and authoritarian banking system of education okay banking education system तो आमे एटी से कोन कहली ना प्रॉब्लम पोजिंग ओके दैट मींस आमे एटी ओपन एजुकेशन सिस्टम टा को ओपन करिवा जते बेले मु गुटे मैथमेटिक्स रो प्रॉब्लम नै कि आसली ठीक अछि एज ए टीचर मते से प्रॉब्लम रो आंसर जणा अछि मु भी एते काई कष्ट करी मु कोन कहली ना मु नै कि से प्रॉब्लम टा को ब्लैक बोर्ड रे बा व्हाइट बोर्ड रे मु ताको लिखिली देई पिलां को कोन कहली जे तुम माने खाता रे लेखो एई भलिया सॉल्व हुए बोली ठीक अछि तो एई जो सिस्टम मो पाखरे थिला नॉलेज मु कोन कहली ना पिला को खाली ट्रांसफर कली से माने ताको अकाउंट रे डिपॉजिट करनेली किंतु पिला एक्चुअली हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट मेथड्स द प्रोसेस कैन नॉट अंडरस्टैंड कारण मु तो निजे एज ए टीचर मु ताको सॉल्व कली टीचर तो सॉल्व कला ना तो सेहिति पे एठी जो जो डायलॉजिकल प्रोसेस रे बा मेथड रे पाउल फेरी कोन सजेस्ट करचोंती ना प्रॉब्लम पोजिंग तो प्रॉब्लम टा पिला फेस करू पिला प्रॉब्लम रो तार जो डिफरेंट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करू एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करू बा न करू बट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एई कांसेप्ट रे से एजुकेशन सिस्टम टा को रखिया पई चेष्टा कले इज एन अल्टरनेटिव टू करंट ऑपरेसिव जोटा कि वर्तमान सुधा भी किछि मात्रा रे रहूची करंट ऑपरेसिव एंड अथॉरिटियन बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम द आइडिया बिहाइंड इट इज द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे बिल्ड देयर इंफॉर्मेशन जेबिति कि मु तुमु जस्ट कहिली जदी पिला को मु प्रॉब्लम देली पिला बा ताकू मु किछि स्कोप देली जे से प्रॉब्लम को सॉल्व करू तो जते बेले पिला चिंता करिवो जते बेले पिला ट्राई करिवो प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई देन
तार थिंकिंग एबिलिटी तार क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी रो डेवलपमेंट हो जो डेवलपमेंट कि विभिन्न डेवलपमेंटल प्रोसेस रे तार हेल्पफुल करिवो तो सेहिति पई एई जो डायलॉजिकल अप्रोच रे जो कांसेप्ट रे आमे जदि टीचिंग दउचंती तो ट्रेडिशनल अथॉरिटियन बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम को आमे रिजेक्ट करिवा आउ आमे कोन करिवा ना वी ट्राई टू बिल्ड डिफरेंट इंफॉर्मेशन विद इन द इंडिविजुअल्स एंड सेटा केमिति होबो ना बाय देयर ओन प्रोसेस निजे समान निज प्रोसेस रे से जिंसटा को क्रिएट करिवे जो कथाटा कहूची रेदर देन व्हेन इट इज क्रिएटेड फॉर देम आमे क्रिएटेड करिवानी समान निजे तांको भितर क्रिएटेड करिवे जोटा कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच रे भी सेमिति कथा कुआ जाईची तो सेही कांसेप्ट को बेस करी कि ए मेथड को यूज करा जिवो जे कि पाउल फेरी एक बाबद रे सजेस्ट करले देन द नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल कॉन्शियसनेस तो Ferry's education aims to develop students conscientizations and critical consciousness, that is the critical awareness. Okay, that means आमे जतबेले गुटे एजुकेशन प्रोसेस रे पिला को इन्वॉल्व करूचंती तो आमे जेहेतु वी आर मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल सो वी यूज आवर नॉलेज टू टीच तो आमे कोन करूचंती ना से नॉलेज टा को यूज करूचंती और से नॉलेज को खाली ट्रांसफर करूचंती तो ए प्रोसेस रे जदी एजुकेशन सिस्टम को निया जाए then student face a lot of problems so एटी फेरी कोन ताकू डिस्कशन कले ना एठी आमे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस रो कांसेप्ट को डेवलप करिवा जोडे क्रिटिकल अवेयरनेस से पिला निजे क्रिटिकली एनालाइज करू डिफरेंट कांसेप्ट को विभिन्न प्रॉब्लम को सिए बा टेंटेटिव सॉल्यूशंस को से आइडेंटिफाई करू प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करू देले जे कोन हबो ना पिलार माइंड ता ओपन हबो टू गेन नॉलेजेस ए कांसेप्ट ऊपर से बेस कले ताको कांसेप्ट को then conscientizations is the capacity to understand the root of social political and economic operations critically जोटा कि आमे आम सोसाइटी रे पाऊ in our society we found generally two category of individuals some are ruler in nature and some are ruled by them okay तो किछि अछंती जो माने रूलर अछंती जो माने कि जदि आमे कहि परिबा से माने जो फाइनेंशियली वेरी साउंड बा स्ट्रांग आमे कहि परिबा नॉट साउंड दे आर वेरी स्ट्रांग इन फाइनेंस कंडीशंस आउ सेमान को पाखरे सब जिंस अवेलेबल अछि बट सम पीपल आर आल्सो इन आवर सोसाइटी दे हैव और दे आर इन पॉवर्टी लाइन तो एई केस रे जो सोसाइटी रे जो इम्बैलेंस क्रिएट होउची जो सोशल हो पॉलिटिकल हो जो इकोनॉमिक ऑपरेशंस रहउची तो ताकू आमे क्रिटिकली एनालाइज करिबा जतबेले जने सेल्फ बा क्रिटिकल अवेयरनेस ता भितर डेवलपमेंट होबो एंड एक्ट टू कॉम्बैट विथ द फोर्स इन द सोसाइटी एंड आल्सो by this process of education we are enabled to develop different capacities within the individuals और जो capacity को नहीं कि से माने कौन करिवे they should fight okay they should become by act to combat with the by forces in society जो society जो forces गुडा ए सब जिंस को opposed करूची जो oppress करी की रखिची suppress करी की रखिची से गुडा को हमें कौन करिवे ता against fight करिवा तो ए concept रहिला कोन critical consciousness then it is a conditions to profound knowledge of the world and ensuring liberations from the oppressions okay the conditions the profound knowledge of the world and ensuring liberations from the oppressions जो oppressions रो हम liberate होबा हम निजो को liberate करनबा बाहर करनबा आ उटे फ्री वर्ल्ड रे आमे केमिति रहि परिबा से कांसेप्ट को आमे जिबा तो एई कांसेप्ट रे एई थ्रो क्रिटिकल एनालिसिस बा क्रिटिकल पेडागोजी कांसेप्ट पिलांग भितरे from very early period of their educational system we should develop such type of concepts then the next one is praxis what is praxis praxis refers to the process of learning as a combination of contemplation and action that means theory and practice theory ame gote jetebele gote काम को नो before that we prepare some plans जोटा कि हम theoretical approach को जतबेले से काम को हमें प्रैक्टिकली जतबेले एक्शन बेस्ड को आसीबो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस सो ए जो लर्निंग प्रोसेस टाकू से कंबाइन कले जो प्रैक्टिस रो कांसेप्ट कहूची दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेम्पलेशन एंड एक्शन थ्योरी और प्रैक्टिस को गुटे कंबाइन प्रोसेस रे केमिति हमें रिप्रेजेंट करबा सेही कांसेप्ट रे फोकस कले देन प्रैक्टिस रेफर्स टू द अप्लाइंग ए थ्योरी इन ए रियल वर्ल्ड सेटिंग ओके तो आमे केमिति डिफरेंट थ्योरेटिकल कांसेप्ट को नै कि हम रियल वर्ल्ड रे ताको अप्लाई करिबा रियल वर्ल्ड रे ताको यूज करिबा रियल वर्ल्ड रे ताको एनालिसिस करिबा दैट कांसेप्ट इज नोन एज प्रैक्टिस एंड इन आवर एजुकेशनल प्रोसेस दैट कांसेप्ट इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी यूजफुल देन Ferry believed that the aim of problem posing education was praxis okay problem
पोजिंग एजुकेशन जो कथा मु कहली दैट मीन्स आमे पिला को प्रॉब्लम दबा ता मानर प्रॉब्लम देकी आम पळै आसीबु सेमिति नुह पिला को आमे प्रॉब्लम दबा आ ता बिहाइंड रे भी रहिबा जे ताकू आमे एनकरेज करिबा ताकू आमे सपोर्ट करिबा ताकू आमे फैसिलिटेट करिबा टू सॉल्व द प्रॉब्लम ओके तो सेई जो कांसेप्टटा जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट रहिला ताकू जते बेले पिला को दिया गला से थियोरी रे देखला से सब कांसेप्ट को ताकू जते बेले से एक्शन को आनिबो ठीक अछि सेते बेले जे सी रियल प्रॉब्लम को फेस करिवो रियल प्रॉब्लम को सी रियलाइज करिवो तो एजुकेशन सिस्टम रे से एई कांसेप्ट को प्रैक्सिस कांसेप्ट रे कनेक्शन करूछंती दैट इज इन्फॉर्म्ड एक्शन then praxis according to him is the process of reflecting on the world and taking action to change it problem को नबा ताकू केमिति बा गुटे थ्योरी को नबा ताकू केमिति हम एक्शन को चेंज करबा सेही कांसेप्ट रे रहिले then it is a complex process by which people shape culture and society जते बेले theoretical concept आउ practical concept merge हबो दीटा जक को कंटेम्पर करिवे दीटा जक को बुझिवे at that time we found we provide new shape to our culture and our society and develop into critically aware beings तो आमे जो तापर धीरे धीरे कोन होबो ना जो गुटे डेवलप्ड नेशन बा डेवलप्ड सोसाइटी कथा आमे कहउछन धीरे धीरे डेवलपमेंट तारा होबो and it entitles the growth of critical consciousness in addition to the social actions तो self consciousness self growth self development सहित simultaneously we found also social action society भी सपोर्ट करिवो सोसाइटी रो भी डेवलपमेंट होबो तो तांको एजुकेशन प्रोसेस रे सी बेसिकली कोन डिस्कशन कले जे इंडिविजुअलिटी और सोसाइटी रो डेवलपमेंट आमे करिबा एक्शन आउ थ्योरी याकू आमे मर्ज करिबा याकू आमे उटे प्रॉपर मैनर रे कंबाइन करिबा आउ तार सॉल्यूशन को फाइंड आउट करिबा ओके सो दीज आर द कांसेप्ट्स ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी then enabling critical pedagogy in the classroom how we use the concept of critical pedagogy in our classroom situation and structure critical pedagogy is more than just a theory it is an inclusive teaching method in which teachers take into account how students various identities will affect their time in the classroom concept को हमें आउट के बुझिबा critical pedagogy that is not a teaching practice but teaching theory okay that is an inclusive teaching method inclusive method हमें आगु जानि चोती विभिन्न कांसेप्ट रे हमें पढिथिलु the inclusive process that is the process where we can teach and learn combinedly together under a single roof irrespective of caste creed race sex everything किछि भी biasness रहिबोनी किछि भी आम भितरे separation रहिबोनी every individuals are equal and all students are learn together within a single classroom situation तो एई कांसेप्ट को बेस करा गला जदि आमे क्रिटिकल पेडागोजी रो कांसेप्ट नउचंती ताले आमे ए कथा को एन्श्योर करि परिबा क्लासरूम सिचुएशन रे then critical educators accept variety and even modify teachings and assignments to better meet and needs of their students okay better meet and needs of the student पिलां को भलो भाबरे बुझिबा पिलां को प्रॉपर जो तांकर कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करिबा पिलां को प्रॉपर गाइड करिबा पिलां को प्रॉपर पाथ शो करेबा टुवर्ड्स देयर गोल ए सब कांसेप्ट केते बेले ही परिबो इफ वी बिकम ए क्रिटिकल एजुकेटर्स as opposed to fighting against the ignoring pupils and different with different viewpoints जेतु इंक्लूसिव प्रोसेस कथा रहउची तो आमे एटी कोनोसी इंडिविजुअल को हम क्लासरूम रे इग्नोर करिबा नाही एवरी इंडिविजुअल्स आर इक्वल एवरी इंडिविजुअल्स आर come to our educational system for gaining education so we equally treat all of them ए कांसेप्ट को बेस करिकी क्रिटिकल पेडागोजी को यूज करा जिवो then critical pedagogy supports multicultural education and culturally sustaining pedagogies that bridge the gap between mainstream and the cultural knowledge by putting students so in our educational process generally we found the system of education that is diversified system that means we found different students belongs to different type of culture so here ये जो multicultural system अछि से cultural system रे कोन हुए ना गुटे गैप हुए ठीक अछि तो मु जो सोसाइटी रहउची से सोसाइटी रे गुटे एजुकेशन सिस्टम रहउची तो से सोसाइटी रे भी डिफरेंट कल्चर रहउचंती तो जतबेले हमें ए डिफरेंट कल्चर रो कांसेप्ट को हम सिंथेसाइज न करूचंती तो हमें प्रॉपर मेन स्ट्रीमिंग प्रोसेस को पिलांगु आनी परिबा नाही कारण सी ता कल्चर रे बढ़ियो ये या कल्चर रे बढ़ियो तो ए जो सेपरेशन ऑफ कल्चर रो कांसेप्ट रहिबो जोथरे कि प्रॉपर डेवलपमेंट एन्श्योर ही परिबो नाही बा मेन स्ट्रीम रो डेवलपमेंट ही परिबो नाही तो ए क्रिटिकल पेडागोजी थ्रू क्रिटिकल पेडागोजी हमें कोन करबा ना जो गैप अछि मेन स्ट्रीम
आउ कल्चरल नॉलेज बाय पुटिंग स्टूडेंट जो डिफरेंट स्टूडेंट माने जो डिफरेंट कल्चर रु आसुचंती तांको भितर जो गैप अछि से गैप टाको हम रिड्यूस करबा एंड एक्सपीरियंसेस एट द सेंटर ऑफ द करिकुलम रे भी से कांसेप्ट रहइबो सिंस चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे कैन पर्सनली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स जेतेबेले से माने पर्सनली एजुकेशन सहित रिलेटेड बा रहिबे पर्सनली एजुकेशन सहित जेतेबेले से माने अटैच्ड रहिबे देन दे आल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंट इश्यूज इन आवर सोसाइटी एंड ताको केबिति सॉल्व करिवे ता प्रोसीड्यूर भी से माने बुझी परिबे then when maintaining pluralism is the goal in the classroom students community behaviors are therefore viewed as a strengths तो concept pluralism रो concept जो माने sociology फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो माने पढिथिबो तो प्लुरालिज्म रो कांसेप्ट बुझी परथबो तथापि मु थरे कहि दूची जे आवर सोसाइटी आवर कल्चर दैट इज अ टेंडेंसी ओके आ जो टेंडेंसी टा रहिबा दरकार कोन टेंडेंसी ना प्लुरालिज्म रो कांसेप्ट दैट मींस आवर सोसाइटी ऑलवेज नीड टू ऐड न्यू टाइप ऑफ कल्चर विद इन इट तो आमे कोन चेष्टा करू ना जते बेले नुवा कथा गुटे अलगा कल्चर आमे पाउचंती तो आमे ताको आम कल्चर ऐड करिकि आम कल्चर को प्लुराल करिबा तो एई कांसेप्ट को आमे कोन कहू ना सोशल प्लुरालिज्म बोली कहू तो ए कांसेप्ट को जदी आउ ए कांसेप्ट सोशल प्लुरालिज्म इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी रे आमे जदी डेवलपमेंट कथा चिंता करूचंती सोशल प्लुरालिज्म दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ताको आमे करिबा दरकार is the goal of classroom goal of the classroom students community behavior are therefore viewed as a strengths then the instructor of or teachers should not think knowledge is simply contained in the curriculum materials तो एठी critical pedagogy कोन कहिला जे आमे जो curriculum रे जो कथा अछि these are the only sources of our knowledge ए कथा को टीचर बा जो एजुकेटर बा इंस्ट्रक्टर से माने भाबिबे नाही apart from these we have a lot of things from which we can gain different type of knowledges and the story the plays and the students cultural display are the just few of various tools the instructor can employ these kinds of tools empower the learners and encourage their creativity and critical thinking तो ए सब कथा देले आमे पिला को फ्रीडम दउचंती पिला को भाबिया पई स्कोप दउचंती जोथि कि पिलार डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली एन्श्योर करि परिबा and the teacher can also foster a community in the classroom where students can take on different roles use their existing knowledge to learn more okay जेहेतु आमे डिफरेंट कम्युनिटी आमे जेमिति कहउचंती जे जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच रे students minds are not blank slates they have a lot of experiences from their infancy periods तो ए पीरियड रो जो एक्सपीरियंस तांको पाखरे अछि से एक्सपीरियंस को बा जो कम्युनिटी जो तांको एक्सपीरियंस देछि से एक्सपीरियंस को से माने केमिति एजुकेशन प्रोसेस रे प्रॉपर्ली यूज करिवे आउ केमिति एजुकेशन डेवलपमेंट करेबे तांको भितरे से कांसेप्ट को यूटिलाइज करिबा थ्रू क्रिटिकल पेडागोजिकल कांसेप्ट सो दीज आर ऑल अबाउट कांसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी व्हिच वी यूज इन आवर क्लासरूम सिचुएशंस then the last part that is conclusion various disciplines were required different approaches to adopting critical pedagogy and what works in one class might not work in another तो जो प्रोसेस रे बा गुटे प्रकार क्रिटिकल पेडागोजी हम गुटे क्लास रे यूज करछन सेम प्रोसेस टा हम जदी आ गुटे क्लास रे यूज करबा जे सक्सेसफुल हो सेमिति किछ कथा नै तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द टीचर्स क्रिएटिविटी तो टीचर केते इनोवेटिव प्रैक्टिस करूची टीचर केते क्रिएटिव मैनर एजुकेशन प्रैक्टिस करूची से कांसेप्ट बेस करी क्रिटिकल पेडागोजी आगु जीवो and a history instructor might consent a historical accepted progressive events while a literature instructor might raise concern about the book's descriptions in a typical cultural stereotype तो different event जेमति history instructor से historical acceptance concept रे जीवो literature instructor different books सेतरे कोन अछि descriptions तो descriptions तो cultural stereotype ए concept को नै की जीवो तो different process different context different concept को नै की pedagogical approach different होबो by critical pedagogy by concept on the other hand science instructor might advise people to consider how scientific advancement and effect on depressed groups finding connections across the objects is frequently required because the critical approach is not limited in a single field of स्टडी और कल्चर तो गुटे प्रकार कल्चर बा गुटे प्रकार फील्ड रे सेटा कंप्राइज ही रहिबोनी ये एलाबोरेट होबो डिफरेंट पार्ट को जीवो आ विभिन्न कांसेप्ट को से कोन करिवो
ना नॉलेज रे आम भितर स्टोर करके रखिबो. So these are all about the concept of critical pedagogy. Thank you all.